कैंसर के मरीज आते हैं, वहाँ अगर कोरोना के भी साथ में होंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारा एक और हॉस्पिटल है जो जनरल है, हम उसमें 40% कर देते हैं, 20% की बजाय इधर का कोटा उधर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने उनकी बात मान ली। इसी तरह से किसी की कुछ और छोटी मोटी समस्या थी, किसी की और समस्या थी, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बस एक ही चीज नॉन नेगोशिएबल है, हमारे दिल्ली के लोगों का इलाज करना पड़ेगा, कोरोना के मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। दूसरी चीज ये कर रहे हैं, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, इसके ऊपर मैं मानता हूं कि पहली बार इस तरह से कोई ऐप देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर पहली बार बना है जो हर अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर का डेटा इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहा है, जनता को बता रहा है, और जनता जाके डिमांड कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे टीवी चैनल वाले, सारे अखबार वाले फोन कर करके एक अस्पताल की रोज रिपोर्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया, इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया। लेकिन इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। ट्यूसडे को जब हमने इसको लॉन्च किया था, दिल्ली में सारे अस्पतालों को मिला के 2800 मरीज थे, और उसमें मैक्सिमम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थे। आज दिल्ली के 3900 मरीज हैं, 3900 मरीज हैं, 1100 मरीज ऐड हुए हैं मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वो इसी वजह से लोग, क्योंकि लोग अब इस जानकारी से सशक्त हो गए हैं और लोग जाके मांग रहे हैं। मैं फिर भी डिमांड करता हूँ, कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूँ वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा, और वो हमें जानकारी देगा कि कितने बेड इसके अंदर भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। एक दिक्कत जो कुछ लोगों ने मुझे बताई कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं, कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। तो आज हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा, और टेस्टिंग के बाद अगर कोरोना आ जाता है तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कोरोना नहीं आता है तो उसको नॉन कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उन लोगों को कल से मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था कि हमने कुछ चंद दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है। 36 लैब अभी भी काम कर रही हैं। तो उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है जो लैब गलत काम कर रही हैं?
तो उन 6 लैब के खिलाफ एक्शन लिया, 36 लैब अभी भी काम कर रही है, पूरे सैंपल उठ रहे हैं। अगर आपको अपना टेस्ट कराना है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम कहां जाएं अगर टेस्ट कराना है, सभी सरकारी अस्पतालों के, दिल्ली सरकार के और कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी फ्लू क्लिनिक बनाए हुए हैं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के या प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्लू क्लिनिक में चले जाइए, वहां पे टेस्ट होता है। दिल्ली सरकार के 17 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में, आप वहां चले जाइए, वहां टेस्ट होता है। और इन 36 में से जितनी प्राइवेट लैब्स हैं, वो प्राइवेट लैब्स अपने खुद के, आप सीधे प्राइवेट लैब से संपर्क कर सकते हैं, वहां भी टेस्ट होता है। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम जितनी भी टेस्टिंग की, आज सबसे ज्यादा टेस्ट पूरे देश में केवल दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट, और इतने टेस्ट हो रहे हैं कि जो सेकंड है हमसे बहुत दूर है। सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है, लेकिन जितनी भी टेस्टिंग कैपेसिटी कर लें, कमी है, लिमिटेड है। अभी हमारी इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी केवल और केवल लोगों की जान बचाना है। माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, वो तो ठीक हो ही जाएंगे। कोरोना आया चला जाएगा, जैसे बुखार आता है चला जाता है। जो सीरियस केस हो जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिर जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उनको बचाना हमारा मकसद है। अगर सभी एसिम्टोमेटिक लोग अपने टेस्ट कराने पहुंच जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा हमारा। लोगों के मन में दहशत है, इस दहशत को निकालना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सब चाहते हैं कि मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है, अगर हर रोज 10,000 एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। तो एसिम्टोमेटिक वाले प्लीज टेस्ट ना कराएं, इंसिस्ट ना करें। एसिम्टोमेटिक वाले अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो सीरियस लोगों की टेस्टिंग रुक जाएगी। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एसिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, वो टेस्ट ना कराएं। टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम्स हो लास्ट मिनट, अगर कुछ हैं तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। हम उसको एक एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए, कुछ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर देंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार। Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, addressing the media, putting out a few important notifications about testing and about hospital bed availability. What the Chief Minister said very clearly is that no patient, no serious patient can be turned away by any private hospital under any circumstances. A COVID negative certificate should not be demanded from them. He further also said that some labs are not following rules and they are violating the orders and directions of the state government. Strict action will be taken against them. Further, he gave out a list of the number of testing centers. 17 COVID testing centers across Delhi and 36 private labs are also conducting tests. However, he has put in a word of caution that everyone should not rush to get a test done if there is no such issue with them, in the sense that if they are only having mild symptoms or asymptomatic, then there is no requirement to go for a test, because he believes that the systems can crash and collapse if people even with mild symptoms go for testing. So the Chief Minister believes that at the moment there are limitations of testing, and therefore there should be a certain amount of caution in the number of people who show up for testing. Ayushman Kumar joining me now with more information. So Ayushman, what I could understand from what Chief Minister Arvind Kejriwal said, that unless you are among those who have been contact traced by the government for coming in touch with a COVID positive patient, you should not be going for a testing if you are asymptomatic. Now, is that the clarification that we were seeking? Because prior to this, we were reporting about how the Delhi government testing policy is not in line with the ICMR guidelines. Afrida, there are two major takeaways from today's briefing of Arvind Kejriwal. He clearly took note of the questions which have been raised on corona application and the availability of bed that is there in the hospitals. He clearly said that there were few hospitals which were in fact not providing the actual information. He said that the information was being updated from the hospital side, and in actual they were misrepresenting the facts towards the people who were coming. And from now on, they are planning to depute a Delhi government official in the private hospital.
the private official, the private government of private health centers have been told that they need to be on toes and they need to be there with the government on treating the COVID patients. Now, on the testing part, he clearly said that asymptomatic people will come in large number, and that remains a worry. Now, the ICMR clearly says that the asymptomatic people, if they have come in contact with the COVID positive person, direct or high risk contact, they need to be tested. Now, the problem is that in Delhi, the asymptomatic word has been removed, and that was which was being questioned. It was never said that Delhi is testing less. Delhi, in fact, is testing more than 11,000 people, which is, in fact, the highest in the country. But currently, what we are getting to know, what the chief minister said, is that he can't test asymptomatic people. Obviously, the ICMR has always said that the incremental testing does not mean everyone will be tested, but the main contention here, Afrida, is that asymptomatic, the word which has been mentioned in the ICMR guideline on May 18th, that is not there in the DGHS guideline for testing, which has been released on June 2nd. Now, that is what has been the question in question as to why people who are coming direct contact, even if they are asymptomatic, why testing won't include that. If only they are going to be if they are going to turn symptomatic, only then testing will take place. That is what our question is. But the CM made it clear that asymptomatic won't be tested. Currently, the testing status is that Delhi is in fact testing more than 11,000 people, if you consider the per million population. Afrida, we are the Delhi Chief Minister, after we reported the Corona app story, seems to have taken note and now has said that he has also called the hospital owners and has said that definitely they need to be involved, they need to provide the bed, and they need to be along with the government in order to fight this COVID pandemic that is currently witnessing high number of cases in the national capital right now. But Ayushman, yes. Does it also seem to you that as if all the private hospitals, the stakeholders, were not consulted before coming up with a Corona app, which does not have the accurate figures? I mean, the Chief Minister has candidly admitted that the figures do not tally because some private hospitals are not cooperating and he's going to take action against them. But in the meanwhile, it is as good as not having a good enough app which he promised that people can rely on. This particular Corona app that you have exposed do not have accurate information. The Chief Minister did not really come up with why they did not streamline the process and correct the kind of loopholes that exist before announcing this app. Now, after it is announced, there are a number of loopholes that you have exposed. Afrida, definitely if you see the medium of app and the regular update, it is now being updated twice in the day. So definitely it's a good move, no doubt. But the point that you are raising, that hospitals need to be additionally informed and all of that system has to be taken, we have to take into the account that currently the situation of the national capital, given the case rise, it is not ideal. So definitely a lot better could have been done, but what has been done is also not less. Definitely a better coordination should have been there, but that is not there. Yes. But what is the most important point here to be noted, Afrida, is that the hospitals have been told that they will update the data. Now the hospitals are updating the data. That data gets reflected in the Corona app. Now when you reach out to the hospital, they clearly deny. Now this is something which the Chief Minister is saying is not expected and it won't be tolerated at all. And that is why the hospital heads have been called and they have been told to meet the Chief Minister and they will have to be involved. Now, the important aspect here remains, Afrida, that Delhi government is also planning that somewhere the app will now be made in a way that the live status of Corona beds and ventilators can be done, so that people get to know as to on a regular interval as to what is happening. Currently, it is being updated only twice. Now, the Chief Minister has clearly said that yes, definitely there is a problem prevailing at the end when we are seeing that there are several hospitals who are denying even after the beds are available. And that will be cleared in some time, because from now on, we are going to witness that Delhi government will depute an official who will look into this matter. So definitely we can expect things to improve. But yes, the miscommunication is definitely there, and that the government has definitely to work upon.